stated this. Now the question comes with respect to that 3 sessions. There has been a talk about normalization of scores. So they talk about a normalization procedure will be used to compile law scores across batches and ensure a level playing field where candidates are neither benefited nor disadvantaged due to the difficulty level of the exam. Now, again, this comes to me as a mentor that it's a very difficult proposition altogether. First, coming down with a separate entrance examination, then coming out with a very high standard of technical requirements, then lowering those technical requirements, then coming all together, allowing a private body to provide you that space to give the exam, then coming out with that the exam will be conducted in 3 sessions, and then talking about normalization. There has been since this came to the news, kids have been not trying to get into that particular domain where uh, they're not happy about it because they talk about normal, then they have no clue about normalization of score fasting, and then saying that 3 sessions, different papers, different kind of questions. This again brings into the same difficulty level of questions might change. So this is again a very much disturbing news to me as an educator on a personal level. Again, today in this particular session, which will be taken by Brijbhan, it is on a very relevant topic. Why relevant? Because this particular topic looks important to me when it comes down to NLAT 2020 and also CLAT 2020. And here in Brijbhan, we'll be discussing about Chinese ban, Chinese apps ban. Over to you, Brijbhan. So as we all know that government has banned certain Chinese apps in certain apps were banned around 5-6 days ago, and certain apps were banned a lot ago. There were apps such as TikTok was there, then WeChat was there. Now PUBG is also banned by the government. And when asked the government that why they are banning, the main reason for which they are providing is that it is a harm to India, if I will say personal normal person's privacy, which is a fundamental right in India, and the state has to do certain things to protect the privacy and dignity according to Article 19. So the point is that what is the if I will say that what was the certain need, if I will say, if we will go into the background, that what was the need of certain there was a major thing which was happening on the border, if I will say the Ladakh border between India and China. What was that there was certain increase in tensions between India and China. uh, there was a major violence erupt between Indian and PLA soldiers, which are soldiers of China. So that was the case, and then the government has to do something regarding this. So what the government did was that they banned certain apps which have some Chinese backing on it. So first, the government banned 59 Chinese origin applications that included some top grossing social media apps such as TikTok and WeChat. Or the decision to ban these applications was taken because of sovereignty and security and also privacy matter. So the government's position, if we will say that what was the government positions, that what was their authority, what was their say, that why they banned it. They said that illegal private data of the Indian citizens are sent to foreign locations without Indian users authorization. There was no authorizations which was provided to these apps, but they are still sending the people's private data to certain foreign locations. So that's why they banned the apps. And now after certain days, PUBG Mobile and 118 apps with PUBG Mobile also banned by the Indian government. There are PUBG Lite, PUBG Mobile, UC browser is in there, and there are different sort of apps which is banned by the Indian government. If we will talk about that, how they ban it, like which provision they enforced to ban these applications, it was section 69A of the Information Technology Act. And with the if we will read the relevant provisions in the Information Technology Rules 2009. And what happened was that around 250 apps were kept under radar, and
from these apps, from these 250 apps, these sort of apps were banned. And the media labeled this step of the government as a digital strike on China. This was the step, like surgical strike on Pakistan. These were the term which the media gave. So that this was termed as a digital strike on China. If we will talk about the legality of ban, that how this ban is, that what is the legality of this ban, what is legal backing of this ban, the point is that the center invoked Section 69 of the IT Act 2000. Section 69 of IT Act 2000 was invoked by the government to enforce this, and to enforce this ban. Section 69A of the IT Act was enforced by the government for these sort of ban. If we will talk about what does the Section 69A of the Act talks about. So if we will just read the definition or read the basic title of the provision, it says that power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource. So the provision clearly state that the government has power to issue directions for public access of any information through any computer resource, that the government can block certain access regarding. So if we will just go and read the main provision, so what does it say is that, just a minute, power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource. So if we will read the provisions of the act, it said that if the central government or any officers which are authorized by the central government believes that in the interest of sovereignty and integrity of India or defense of India or any friend relations with foreign states or public order, if these are in danger by a certain computer resource, then the government can block it. So in this case, the Section 69A was enforced by the central government to ban those apps. But now the point is that if I was the if I will say owner of app or the corporation which is the publishing app, then I will say there are certain constitutional right to me, or there are certain provisions which I can say that the ban is not in good favor, in good nature. So we will talk about this also. So what the government did, they imposed a geo block on an online content. जियो ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट पे उन्होंने लगा दिया कि भाई आप प्रायर नोटिस के और ऐप को बैन कर दिया, एक लिमिट दी दैट यू कैन आल्सो बेसिकली ट्राई टू कन्वर्स विद द गवर्नमेंट आल्सो. सो द पॉइंट वाज दैट अब जो गवर्नमेंट का डिसीजन था टिकटॉक को बैन करने का, इट मेट विद लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. देयर वाज थिंग्स that it is trying to subjugate the voice of people who has no voice according to some people. Then the point was raised that TikTok has over 100 million active users in the country, and the ban denies its user the freedom of expression. Freedom of expression deny करता है ये ban, और जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, हमें 19(1)A में प्रोवाइड हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल. अब ये इसका बैन को अगर इस ग्राउंड पे चैलेंज हो सकता है. अब जो हमारी अब अगर हम सेक्शन 69A की बात करें, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या द गवर्नमेंट कैन डू सो और सच सॉर्ट ऑफ थिंग. तो द पॉइंट इज दैट इन फहीमा शिरीन केस, इफ आई विल से, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. फहीमा शिरीन केस, it was basically held by the High Court of Kerala that interference with an individual's internet access to internet violates the fundamental right to privacy. If any authority is interfering with the with individuals' access to internet, वो उनकी जो right to privacy है वो उसको वायलेट करता है. अब जैसे सबको पता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो के पुट्टुस्वामी केस में कह दिया गया है दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड व्हिच इज इंट्रिंसिकली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पॉइंट ये है कि फहीमा शिरीन में ये कहा गया था कि जो इंटरफेरेंस अगर कोई करेगा किसी इंडिविजुअल्स के एक्सेस टू इंटरनेट को, तो वो उसका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा. और जैसा आर्टिकल 21 कहता था, स्टेट हैज टू बेसिकली
say that state has to provide for the dignity of individuals. So जो अगर वो state ही कर रहा है then it is basically wrong. और अनुराधा भसीन वाले केस में भी यही कहा गया था कि जो इंटरनेट, जैसे इंटरनेट का सस्पेंशन इंडेफिनिट टाइम के लिए है, वो गवर्नमेंट का एब्यूज ऑफ पावर है. लेकिन इन्होंने जो फाहिमा शरीन केस का स्टैंड था उसको क्लियर नहीं किया था, और केरला हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो आज तक ओवर रूल नहीं है हुआ है. तो अब जो एक हमारा केस है, जो ये एप्लीकेशंस वाला केस है, तो वो अगर हम कहें तो फाहिमा शरीन वाला जो केस है उसके बिल्कुल उस दायरे में बैठता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि इंडिविजुअल के अगर एक्सेस टू इंटरनेट को कोई वायलेट करता है तो वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है. तो इन केस में जैसे टिकटॉक बैन हुआ है और भी कई सारे एप्स बैन हुए हैं, इसमें आप एक यूजर के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं. यू आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट of individual that to access some sort of internet, and according to the judgment provided in Fahima Shireen case, it is against the principle of privacy, but as it is propounded in the High Court, so the point is that it can't be basically point to notice in Supreme Court, because Supreme Court is not bound by this judgment. But and then there was the claim by Chinese companies that the government in India is not treating them equally among all other companies. They are saying that the government is basically taking a grudge against them because they belong to China, because the government is facing tensions on the border against China. So the government is trying to sort that grudge out by banning these companies. And the government is not treating equally. So they said that it is also a violation of Article 14 of Indian Constitution, Article 14, which provides for right to equality and right to equal protection before law. तो पॉइंट इज के उनने ये कहा था कि जो वायलेशन है आर्टिकल 14 का, और जो हमारे साथ किया जा रहा है वो आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है. अब आर्टिकल 14 जो है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को बराबर का अधिकार देता है, दैट नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू, क्या कहते हैं कि किसी को भी राइट, जो इक्वालिटी, एवरीवन, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, और जो 19(1) है वो सिर्फ सिटीजन्स को क्या कहते हैं, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन देता है. तो वो 19(1) के साथ तो जा नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली नॉट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बट दे कैन गो विद द आर्टिकल 14, बिकॉज if their petition has any sort of basis that this is arbitrary, discriminatory and in violation of Article 14, which is basically, if I will say, the basic structure of our Indian Constitution. तो जो चाइनीज कंपनी है वो ये तो एंजॉय राइट नहीं करती है to freely practice, profess and any trade, because obviously 19(1) is provided only to citizens of India, but Article 14 is universal in nature. If Article 14 is universal in nature, they definitely go to enforce that, and obviously. और जो ये एप्स बैन हुए हैं, तो इसकी रीजनिंग जो आर्टिकल सेक्शन 69 ए के तहत प्रोवाइड की गई है, वो कहा गया है सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को दे आर खतरा है, बिकॉज दे आर सेंडिंग प्राइवेट डाटा टू सम फॉरेन सोर्सेस. एंड अगर हम जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी की केस की बात करें तो उसमें कहा गया जो प्राइवेट डाटा है उसमें प्राइवेट पर्सन का हक है. अब basically the government has to do everything to protect individuals' data and individuals' privacy. So according to this, the government is also not wrong. Because they said that, and they enforce the right provision of section 69A and said that this provision is against the sovereignty, against the sovereignty and security. But point is that was the ban just, fair and reasonable under Article 14? Because there has to be a notice first, and then there has to be that you have to prove that you are not sending the data. You have to, and so the point is that was it just in nature? Was it fair or reasonable? Because the point is that कि अगर जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं है तो ये जो डिसीजन लिया गया है वो बैठेगा ही नहीं जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी के जो केस है उसके रडार में, क्योंकि अगर फेयर, जस्ट और रीजनेबल नहीं होगा, एंड देन यू आर प्रोटेक्टिंग, सेइंग दैट वी आर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, वी आर प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, बट यू कांट प्रोटेक्ट देम ऑन समवन अदर्स राइट. लाइक यू कैन इन्फोर्स समवन्स फंडामेंटल राइट, बट नॉट दैट सेम बाय डिमिनिशिंग समवन अदर्स फंडामेंटल राइट. सो यही पॉइंट है. हालांकि जो आर्टिकल 14 है वो
कहता है कि equal shall be treated equally and non-equal shall be treated non-equally. Alike should be treated alike and alike should be treated alike. But क्या जो है बशर्ते रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. तो जब अगर क्या इस जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये कह सकती है क्या कि चाइनीज टेक कंपनीज जो है वो क्योंकि डिफरेंट क्लास को बिलोंग करती हैं, डिफरेंट हैं, तो उन्हें हम डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं और बाकी को डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं. तो ये जो है वो क्लेम सही नहीं बैठेगा क्योंकि क्या है कि क्या है कि ये क्लेम इसलिए सही नहीं बैठेगा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आर वेयर एवर फ्रॉम देयर आर कंपनीज लाइक फ्रॉम चाइना, यूएसए, the companies are from different nations. If you are treating Indian companies and Chinese companies differently, it is fine. But if you are treating Chinese company and USA companies differently, then it is not fine. Because now the point is that for you, for the country, the companies are at the same pedestal. You can't grant more rights to Chinese companies than the USA companies or vice versa. So point यही है कि पर अगर हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो यही कह रहे थे कि जो चाइनीज ऐप हैं वो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो डेटा है वो प्रोवाइड कर रही है फॉरेन सोर्सेस को, और इससे क्या है जो हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन है कंट्री का वो लीक हो रहा है और इससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है. और ये जो हमारा सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट है जो कहता है कि आप सोवरेनिटी और सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशन के नाम पे किसी भी कंप्यूटर सोर्स को बैन कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, उसके अकॉर्डेंस में ये था. पर इशू ये है कि जो अनुराधा भसीन केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट आप रिस्ट्रिक्शन को एक्सेस कर सकती है, पर और जैसे सबको पता है श्रेया सिंगल केस में 69A की वैलिडिटी को तो मान लिया गया था पर 66A को हटा दिया गया था. तो 69A तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना ही है, माना नहीं है और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो अब जब ये एप्स का हुआ है बैन और जो डेलिब्रेशन और डिस्कशंस हो रहे हैं इस पे, तो द पॉइंट इज दैट नाउ 69A has to be viewed in that lieu, that if what, like let's suppose now the government has been Chinese apps, now there is an app which basically provides that where the government has failed, where are not the roads, where are potholes and all that, and the government supposedly bans that they are also providing internal security data to some other company in foreign, and the government, because the government has sole authority under section 69A of the IT Act. और अगर ऐसा करते हैं तो पॉइंट यही है कि वो अपना जो डिस्क्रिशन है वो उसको इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं. द गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन दैट मच दैट नाउ नो वन कैन क्वेश्चन दैट ऑथोरिटी, दैट डिस्क्रिशनल ऑथोरिटी. एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट एज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और पीपल हैज टू एक्ट इन दैट मैनर. दे हैव टू डेलिब्रेट ऑन द सेक्शन 69A, दे हैव टू एक्ट एंड दे हैव टू लुक बियॉन्ड द श्रेया सिंघल केस फॉर द सेक्शन 69A. अब ये तो बात हुई इंडियन लॉ की कि ये जो बैन हो गए हैं ये सब ठीक है, पर आप बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, बिकॉज इन इंटरनेशनल लॉ इंडिया ऑल्सो हैज सर्टेन व्हाट आई विल से सर्टेन डायरेक्टिव्स टू फॉलो रिगार्डिंग दीज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑल. और चाइनीज जब ये when these all applications were banned, Chinese government threatened India that it will take the matter to WTO, World Trade Organization, and claim that the restrictions are against the agreements of World Trade Organizations. So as we all know that every country has signed some treaties, some conventions regarding some issues, and then if any country is acting against the provisions of these convention or in contravention of this convention, they can be taken in the, if I will say ICJ is there, then WTO is there, then there are arbitration courts also, so they can be taken. और पॉइंट ये था कि चाइनीज गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दीज जो ये बैन हुआ है, ये जो इशू है, ये WTO के जो प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड हैं, जो एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड हैं, उसके अगेंस्ट है. और जो इंडिया और चाइना है वो बोथ WTO रूल्स को और रेगुलेशंस को अबाइड करते हैं और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड हैं उनको फॉलो करते हैं. और WTO के पास ही सिर्फ सोल अथॉरिटी है कि जो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड मैटर्स हैं उनमें देखने का, और जो डिस्प्यूट इफ एनी डिस्प्यूट्स अराइजिंग टू सेटल दिस डिस्प्यूट थ्रू सम पैनल्स और अपेलेट बॉडीज. और WTO में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ये डेफिनेटली करना है दैट एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द WTO is under the obligation to keep its market open for all. They can't deny someone to basically in their market.
and abstain from affecting any discriminatory policies. So discrimination is there because obviously the government acted on its own. They didn't take any consideration from these apps. Like if I will say PUBG was banned, but before PUBG was banned, there were like privacy policy change in the app just because to cater the Indian government demands. But still the application was banned in India. Now what did the company did? The South Korean company said that now Chinese Tencent Games will not publish the game in India. So what is happening that South Korea is bringing the same game, same thing, same application with all same thing, but now they are and I know that definitely this app will be sustain in India because obviously it is from South Korea. So the policy to ban all these 200 to 50 apps is obviously discriminatory in nature. And WTO has certain frameworks regarding that how all this cross-border trade will work, how and there are like, if I will say, there are general agreement on trade and services, then there is general agreement on tariffs and trade gate is there. So they are basically more technical. But if I will say that what basically they provide, what is the if I will say what is the dimension of them, so they just provide that कि जो जितने भी मेंबर हैं WTO के, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं WTO के, वो कोई भी अपनी जो कंट्री है उसमें कोई भी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं किसी भी फॉरेन ओरिजिन की कंपनी के रिगार्डिंग, और वो कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज फ्रेम नहीं कर सकते हैं फॉरेन ओनरशिप के रिगार्डिंग. और जैसा कि इंडिया की जो ऐप बैन पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है चाइनीज कंपनी के अगेंस्ट, तो ये कहा जा सकता है कि जो इंडिया है वो GATS जो एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट जा रहा है. हालांकि ऐसे भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि जब स्टेट कहे कि स्टेट कैन ब्रिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन कैन बी एज एन एक्सेप्शन. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं GATS में, WTO में कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट पॉइंट ये है कि क्या वो एक्सेप्शंस इस केस में वैलिड होंगे, क्योंकि यहाँ पे न तो उन्हें चांस दिया गया. इफ आई विल जस्ट टॉक अबाउट वन ऐप, they to also change their privacy policy according to Indian government. So I don't think that the Indian government will win this case in WTO. There is, because it is inherently discriminatory in nature. अब if we will talk about that, is India's move discriminatory against China? तो जैसे अभी क्या हुआ है कि कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक डेफिनेटली कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो इशू हुआ था ओवरऑल, फेसबुक पे तो बहुत सारे ये लगाए गए हैं एलिगेशंस दैट दे सोल्ड दैट कंज्यूमर्स डाटा. कांग्रेस मतलब अमेरिकन कांग्रेस ने भी यही लगाया था और इनके ऊपर ये सब इशू हुआ था. और अमेजन के साथ भी यही सेम चलता है कि फेसबुक अमेजोन दे डू द सेम थिंग एंड प्राइवेसी रिलेटेड इशूज का उन पे लगा था. और जो ये कंपनीज हैं वो ये इंडिया में है बहुत सालों से और इनके ऊपर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है. पर दूसरी कंट्रीज में इनके ऊपर एक्शन लिया गया. जैसे इफ आई विल से अबाउट US ऑफ ए, तो USA में लिया गया है. फेसबुक के मार्क जकरबर्ग की पूरी एक हियरिंग हुई थी, फिर जेफ बेजोस के ऊपर भी लिया गया था. पर इंडिया में इनके ऊपर कोई भी स्क्रूटनी नहीं है. जैसे अभी फेसबुक का इंडिया में इशू हुआ था, कांग्रेस और बीजेपी का इशू हुआ था फेसबुक के रिगार्डिंग, एंड देन फेसबुक सस्पेंडेड सम बीजेपी लीडर्स अकाउंट. तो दीज और फेसबुक को तो ये भी कहा गया था कि रशियन दे समहाउ interfered in presidential election in US and Russia. So जब इन पे इतने ग्रेव एलिगेशंस हैं तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया इनके रिगार्डिंग. ना तो फेसबुक के रिगार्डिंग किया है और ना अमेजोन के रिगार्डिंग किया है. पर जो ये चाइनीज ऐप हैं, जो अभी एक स्टडी हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये तो थोड़ा बहुत, if we will compare Facebook and Amazon's data issues and with Chinese apps तो they basically collect relatively excessive information from their users. If I will say Chinese apps जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा information user से access कर लेते हैं. से अगर if I will say if you will ever log into any Chinese app which was banned, you know that they will first ask for camera, then they will ask for microphone, they will ask for your precise location, then they will ask for your gallery, then they will ask for many things were there. If this is the app which requires auto start, then they will require for auto start. So there are many issues. और जो भी हमारे बॉर्डर पे टेंशन चल रही हैं वो ये चीजें यूज हो सकती हैं इंडियन मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर स्पाई करने में.
जैसे अभी हमने सुना होगा कि जो सोशल मीडिया है वो बंद कर दिया गया है बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज द डाटा of the Indian armed forces are important, because then you can know about the precise location and all that, and track where this guy is going and all. So there are honey trap cases also from social media, they got to know about this thing. तो ये भी एक इशू है कि ये जो एप्स हैं जो इतनी सारी सिक्योरिटी, ये जो इतनी सारी मांगते हैं कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियन आर्मी। तो ये जो है चाइनीज ऐप, ये थोड़ा सा बिगर थ्रेट है इंडिया की सोवरेनिटी के रिगार्डिंग अमेजोन और फेसबुक से ज्यादा, क्योंकि दे ओनली इंटरफियर विद सम सॉर्ट ऑफ election and sort of thing. But the point is that these apps, the Chinese apps, they acquire like many irregular or unnecessary details, which is not even necessary at any cost. So अगर हम GAT को जो फ्रेमवर्क है उसको भी इंटरप्रेट करें तो इंडिया का जो मूव है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा कि इंडिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के रिगार्डिंग कर रहा है। बट डेफिनेटली इफ आई विल से कि डिस्क्रिमिनेट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। तो पॉइंट यही है। अब चाइना वाज व्हाई एबल टू लॉन्च इट्स एप्स इन इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज अ फ्री मार्केट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल। कंक्लूजन क्या है हमारा कि इंडिया ने जो है कुल 200 के लगभग 200-250 के लगभग ऐप बैन कर दिए हैं। अब जो भी उसके सर्वेलेंस के रडार में थे, और जो थर्ड वेव आया था वो पबजी मोबाइल, बाइडू, एमबी मास्टर को भी लेके गया है। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है वो स्ट्रांगली अपोज किया है इंडिया मूव, और इंडिया को अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए बोला है। पर मुझे नहीं लगता, इफ आई विल से इन माय ओपिनियन, दैट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। अदरवाइज like PUBG is basically trying to gain the second entry by basically leaving all these ties with Chinese Tencent games and searching for because if I will say PUBG Mobile is developed by South Korea and they are published by Tencent Games in India, so they are looking for some other publication so that they can publish because Tencent Games sales were massively dropped because PUBG is a huge market in India. There are like very influencer, there are gamers, whole gaming industry is there, if I will say. So it cost a lot of, if I will say, it cost a lot of displeasure, if I will say, and lot of financial struggle to the South Korean company as well as Tencent, which is so the South Korean company, if they have to success, they have to gain the second entry. And how they are gaining second entry? By trying to publish the game from some Indian company. और अगर हम लॉ की बात करें तो अगर इंडियन लॉ की बात करें तो इंडिया के रूल के हिसाब से बिल्कुल वैलिड है, और चाइनीज कंपनी के पास फुल राइट है कि वो इसको चैलेंज कर सके। और क्योंकि ये बैन पूरा वैलिड क्यों है? क्योंकि सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट में आया है, और इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कर सकती है सर्टेन कंप्यूटर सोर्सेज को ब्लॉकेज। तो ये तो उसके रिगार्डिंग से, और वो सीरिया सिंगल वाले जो केस था उसमें सेक्शन 69A को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूव किया गया है। तो जो पॉइंट है कि सेक्शन 69A कॉन्स्टिट्यूशनल है और द गवर्नमेंट bring all these directions under section 69A, तो it is also valid। अब पॉइंट ये है कि जो कंटेंशन है चाइनीज एप्स का और चाइनीज गवर्नमेंट का, तो दे कैन आल्सो चैलेंज दिस थिंग, like they also can challenge this thing by saying that this violates article 14 and और जैसे कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग वाले केस में हुआ था कि एनी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल रिट पिटीशन इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो चाइनीज कंपनी जो है वो चैलेंज कर सकती है फ्रीली इस बैन को, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 14 का भी है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्रेरी है, जस्ट एंड फेयर नहीं है, तो दे कैन चेंज। और अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ऑल्दो इंडिया जो है वो वायलेशन में है GATS और GATT एग्रीमेंट्स के, बट इसको दूसरी मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट भी है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो रिमूविंग सम चाइनीज एप्स बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक दैट इट हैम्पर्स विद द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट सेंड्स इंडिविजुअल्स डाटा टू सम फॉरेन सोर्स। और GATT में भी ये अनलाइकली टू हैपन है। और चाइना ने हरदम से अपना जो फॉरेन टेक जायंट्स के लिए मार्केट क्लोज रखा है, जैसे उनके यहाँ फेसबुक नहीं है, याहू नहीं है,
ठीक है, तो उनके जो लॉजिक होंगे वो खुद ही दे विल ओनली डिफाई दैट देयर लॉजिक. तो आई डोंट, in my personal opinion, I don't think that these apps are going to return until and unless they are being published in India by some other, if I will say some other authority, as PUBG is trying to say. तो point is that कि अगर क्योंकि अब जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया था कि दे आर एंगेज इन एक्टिविटीज व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया. So the government has pretty solid point in their defense, and as section 69A is not invalid and unconstitutional, they will not, Chinese corporation will not be successful in Indian court, because the point is that the words which are used are so harsh and so true, because if we will say the dispute which is going on border, and if the court will against there are a lot of Indian sentiments issues associated with the case, if I will say. So I don't think that it is going to happen that this Chinese government challenge, Chinese apps challenge will be valid in any court of India. And like India, and it is also, if I will say, how is the economic impact of this app ban. So point is that China is a tech giant, and India has a large consumer base. Like TikTok has 100 million downloads, PUBG had a lot of downloads. Then there are different games like VPN for TikTok has different downloads. Then there is Legend Rising Empire, millions of lakhs of downloads. So point ये है कि जब ये ऐप बैन हुए तो जैसे टेंसेंट का मार्केट क्रैश हुआ था 27% से, तो चाइना को बहुत लॉस होगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सर्टेन, बिकॉज इन पे जो भी इशू टैक्स वैक्स लग रहा था जो भी, द चाइनीज गवर्नमेंट वाज टेकिंग इट ऑब्वियसली. सो चाइनीज इकोनॉमी को थोड़ा सा तो because it will hamper it. But now the problem is that Indian, like if I will say now, this is a major step in Indian tech industry also, because now these tech giants in India also have to come forward to give people alternatives, because alternatives are necessary, because India has a huge consumer base, and if they will not act quickly, there will be certain other company or certain other corporation from another country which will come and snatch the market. So banning these apps, if I will basically rewind all these things, so these apps were all banned. First, some apps were banned, then 118 apps were also banned by saying that it violates sovereignty and security of India under Section 69A of IT Act, which provides that the government can block all those apps if they hampers with sovereignty and security of India. Then it does, and then Chinese corporation and Chinese corporation of these games has certain rights, like because the fundamental right that of equality, that this ban is arbitrary, just and not reasonable. They can basically go to any court, because they, in Shanghai case it was held that any foreign company can can file an application in Indian court, writ petition in Indian court. Then the point is that in WTO, China will not succeed, because first of all, India has taken a stand against sovereignty, and second, China has already closed its market for tech giants. So the point is that if you are not doing that, why someone will also do it? So this thing, then there is this point that that whether the Supreme Court, whether the Court of India will say that this is just and reasonable. So in my opinion, it will not say that it is unjust, because the point is that first of all, there are a lot of sentiments associated with, second, the situation, and third, there are a lot of because these apps required all these data, and so भले ही वो ये बोले कि we don't sell those data, but this argument will never be in their favor, because the point is that why, if you are not sending this data, then why you are requiring those data which you don't need? So this argument would also not be in their favor. So in my opinion, these apps are not coming back, but yeah, they can come back by if it is published by some other authority. So yes.